Hello and good afternoon to all of you. A very good Saturday evening to all of you. I think I have joined in 2 minutes ahead of time. Yes, 2 minutes ahead of time. So I'll just wait for you people to come in and then we will start with our today's discussion. Okay. So there are so many people who have already joined in, even before the time. Okay, okay. That is great. That is great. So, good evening. Kanchan is saying good evening. Good evening to all of you. To all of you. I can see a lot of people have already joined in today. Uh, before time. That's great. That's great. We can start, right? And as you know, कैसे हो आप सब लोग? Yes, Saturday evenings are special. पहले तो और भी स्पेशल होता था जब हम लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस करते थे, लेकिन अभी भी मेरे लिए सैटरडे इवनिंग्स आर वेरी स्पेशल बिकॉज कल संडे है। ये जो एक फीलिंग है, दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव, इजंट इट? आप लोगों को भी शायद यही लगता होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। Okay, so Dolly Yadav is saying fine. That's great, Dolly. You should always keep absolutely fine, fantastic. You should be always on the top of the world, right? The person from whom the institute from where I did my certification, they used to tell us anybody who asks you, how are you, always say you are on the top of the world. So that positivity, it spreads. I believe I'm audible to all of you. I do not know. I'm having a kind of a problem with my headphone, or the connection doesn't. I'm not sounding very well to me. I mean, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ठीक तरह से आप लोगों को? हम्म? क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप लोगों तक? एक या दो हिंट दे दीजिए। गुड इवनिंग का बहुत सारा मैसेज मुझे मिला। हाय, ओके, हाय, हुज दिस वीकेडी? कमुलिका, Kamika Godra, okay. VKD Kanchan Soni saying yes, okay. Harpreet is there. Pooja, okay, that's great. Thank you. So, my dear friends, as I told you yesterday, I will be doing oral communication with you. I will be doing oral communication with you. So, before I start oral communication, let me tell you what are we supposed to discuss today. Okay, Manil, Eliza is here, Manil is here, Karnail Singh Chauhan is here, Arpanjot Kaur, सारे लोग आ गए जी। योगा, आप योगा में पीजी कर रहे हैं, वेरी गुड। योगा इज so very popular outside our country, right? Though it is also very popular within the country, but it's also very popular. Okay, Dolly Yadav is saying you're audible to us. So now, the thing is, that uh, whenever we talk, in whichever situation, कहीं भी हम लोग बात करते हैं किसी भी सिचुएशन में, वो होता है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, दो इट इज ऑडियो विजुअल। गुड इवनिंग कांता, गुड इवनिंग विंदर, गुड इवनिंग सिद्धांत, मुकेश, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो इन दैट केस, जो भी बात हम लोग करते हैं किसी से भी, वेदर इट इज इन आवर पर्सनल लाइफ या फिर फॉर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट,
That is oral communication. सबसे ज़्यादा communication we do is oral communication. Oral means through our mouth, right? Praveen, okay, Praveen, hi. So बातचीत, किसी भी तरह का डायलॉग, बातचीत, किसी भी तरह का डायलॉग, किसी भी तरह का one to one, one to many, one to two, one to a class, one to a mass, जो भी हो, that is oral communication, right? That is oral communication. मैं जाऊंगी, मेरे पीपीटी भी है आज आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा टिप देना चाहूंगी आप लोगों को। आप लोग बहुत कुछ सुनते हैं, आप लोग गाना सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, उसमें भी सुनाई देता है, न्यूज देखते हैं, उसमें भी आप लोगों को सुनाई देता है। सो आप लोगों को यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इज without oral communication is incomplete. oral communication के सिवाय communication process incomplete होता है। हम लोग सारा कुछ, we cannot do everything right in writing. Can we do that? We cannot do everything in writing. Okay, so उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए कोई भी communication को थोड़ा अच्छे तरह से करने के लिए थोड़ा बातचीत, थोड़ा वन टू वन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे आता है, अच्छा, कुलदीप माटवी सेइंग इट्स माय फर्स्ट क्लास टुडे, देन यू हैव मिस्ड अ लॉट माय डियर, बिकॉज फॉर मी दिस इज द 9th क्लास। This is the 9th class, right? So anyway, you can always join, because every class, हर एक class में I'm taking up a new issue and I'm trying to complete it. कभी कभी नहीं होता है, जैसे कल मेरा प्लानिंग था कि मैं ओरल कम्युनिकेशन भी शुरू करूं, लेकिन कल नहीं हो पाया, तो वो आज आ गया है, राइट? तो in that case oral communication आज एक नया lesson है, so we can always do it. Let me share the PPT with you and then I will start speaking. And you got to tell me like whether this PPT is showing or not. दिख रहा है ना? अच्छा. Oral communication is communicating with spoken words. It's a verbal form of communication. Where you communicate your thoughts, present ideas and share information. ठीक है? Verbal form of communication with the help of spoken word. That means जो बात हम लोग करते हैं उसके माध्यम से जो communication होता है, like a conversation with friend, family or colleagues, presentations, speeches, etc. Right? All these, ये सारा कुछ क्या है? ये सारा कुछ है ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल, राइट? और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाई डू वी नीड टू कम्युनिकेट ओरली? हमें ओरल कम्युनिकेशन क्यों करना है? बिकॉज इट इज द मोस्ट इंटीमेट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे क्लोज फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अगर कुछ है, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। क्योंकि जब हम बात करते हैं, हम एक दूसरे को ज्यादा समझ पाते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, राइट? हम लोग एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। इट सेव्स टाइम बाय लेटिंग अस कन्वे आवर मैसेज डायरेक्टली टू द अदर पर्सन। मैं एक चिट्ठी लिखूंगी आपको, आप उसको अपने टाइम पे खोलेंगे, पढ़ेंगे, ये वो, दिस दैट एंड द अदर, एंड इट डजंट हैव that personal touch. It doesn't have that personal touch. ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरल कम्युनिकेशन में एक पर्सनल टच है, एक वन टू वन कम्युनिकेशन होता है। इट्स मोस्ट सिक्योर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फॉर क्रिटिकल इश्यूज एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जब मैं आपके पास, आपके सामने बैठ के बात करती हूँ, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। It helps to resolve conflict with face-to-face communication, right? When we see each other,
हम लोग जब एक दूसरे को देखते हैं और फिर बातें करते हैं तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑलवेज ज्यादा इफेक्टिव होता है. इट इज ऑलवेज मोर इफेक्टिव. It's a more transparent form of communication as it lets you gauge how the other reacts to your words. ये और एक transparent in the sense जहाँ पे आप लोगों को पता चले from my facial expression, from my eye movements, right, from my body language, कि मैं इस कम्युनिकेशन में कैसे रिएक्ट कर रही हूँ या आप इस कम्युनिकेशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. समझ में आ रहा है आप लोगों को? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी? आर यू बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड मी? समझ में आ रहा है? यस, नो, मे बी कुछ भी लिखिए कमेंट बॉक्स पे सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड if my oral communication is reaching you. Okay, so Monica is saying yes ma'am. Thank you Monica. Anyone else Monica के अलावा? और एक बात जो कि ओरल कम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हाँ जी मैम. ओके, कंचन इज ऑल्सो सेइंग हाँ जी मैम. अच्छा, ये बोल रहे हैं कि नो मैम. कुलदीप क्या आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पे आपकी परेशानी हो रही है? वेयर आर यू गेटिंग स्टक अप? अगर आप थोड़ा सा बताएं तो आई कैन रियली ट्राई टू हेल्प यू. मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगी. Okay, so Sunil is also saying yes. Jasmeet is also saying yes. Dolly is also saying yes. Malkit is also saying yes. Okay, thank you so much. Oral communication में एक चीज आप लोग बहुत ध्यान में रखिए, वो है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है. Who is your target audience, right? ये बहुत 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 ध्यान में रखिए. क्यों? अच्छा, हरप्रीत इज सेइंग दैट थोड़ा समझ में आ रहा है. थोड़ा करके ज्यादा समझ में आ जाएगा, डोंट वरी. ऑडियंस मतलब आप किससे बात कर रहे हैं. एक ही चीज, जैसे आप लोग मानिए डीजे मिक्स गुरु पट्रोरा. अच्छा, नमस्ते जी. आपका नाम, व्हाट इज एग्जैक्टली योर नाम? नेम. अच्छा, निर्मला. गुड इवनिंग निर्मला. तरुणा सरस्वत. नाइस. कुछ वर्ड है जो समझ नहीं आ रहा है, जैसे please mention the words. I am here to clarify. words mention कीजिए आप लोग. इसीलिए मैं ये कमेंट बॉक्स हमेशा देखती हूँ आजकल, ताकि आप लोगों के दिमाग में जो आ रहा है आई कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट. हाँ, तो ऑडियंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि ऑडियंस मतलब आप किससे ये ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बिकॉज oral communication is very instant, right? वहां पे जैसे written communication और oral communication में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि written communication, suppose I have this book with me, so what I can do, I can read it at my leisure. मैं अपने टाइम पे अपने हिसाब से इसको आराम से बैठ के, if necessary, एक डिक्शनरी साथ में लेके बैठ के पढ़ सकती हूँ, है ना. मैं अंडरलाइन कर सकती हूँ. आई कैन गो बैक टू द सेंटेंस एंड कम, राइट. तो इतना कुछ जब होता है रिटन कम्युनिकेशन में, ओरल कम्युनिकेशन में उतना कुछ करने का टाइम नहीं होता. देयर इज नो टाइम फॉर ऑल दिस थिंग्स टू बी डन in the oral communication. So what has to be done? It has to be instant. मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं. तो it's a spontaneous process. Exactly. oral test में आप लोग जाते हो तो टीचर सवाल करते हैं और आपको तभी के तभी वहीं पे आंसर देना है. There is no scope of thinking, there is no scope of hall collection. अच्छा, हरप्रीत क्या पूछ रहे हैं? मैम, आपने बताया था जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. हरप्रीत, it is known as interpersonal communication. Okay? Harpreet, I think I have answered your query. Right? तो oral communication is instant. ठीक है? और इसके लिए आपके ऑडियंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किससे बात कर रहे हो. What is his or her expectation from you?
What does he or she wants from you? आपसे वो क्या चाहते हैं? किस तरह से आप एक बात को पेश करोगे तो वो उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ओके, उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और उसका रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस होगा. राइट? उसका रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस होगा. सो फॉर एग्जाम्पल, I give you a sentence, right? And you think, and I give you 3 different types of audience, and you think like, आप कैसे उसको in these 3 types of audience आप कैसे उसको place करेंगे, right? The sentence is, I have started a reel in my Insta profile. मैंने इंस्टा प्रोफाइल में रील शुरू किया है. इंस्टा रील्स आते हैं ना, आप लोगों को मेरे से ज्यादा अच्छा मतलब ज्ञान होगा इसका. यू विल नो इट बेटर देन आई डू. तो यू से इट टू योर बेस्ट फ्रेंड, यू से इट टू one person who is say to your elder brother, and the same thing you say it to someone whom you do not know, you're meeting for the first time. 3 types of people. एक ही बात आपको बोलना है that you have started an Insta reel, right? Instagram में आप reels share करते हो. One to your best friend, one to your elder brother or elder sister, whosoever, somebody who is age-wise elder to you, and the third one to a person जिससे आप you are meeting for the first time, right? So will you say the same thing? I mean, the process of saying or the way of saying same to all these 3 people? Yes or no? जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बताइए. Then I will be able to make you understand again what is audience, what is the importance of audience. What is the importance of audience? No. Yes. Your no is my yes. Absolutely. आप लोग एकदम सही है. इसका मतलब with audience the same content तो वही है, आप भी वही हो, आपका reels भी वही है, लेकिन with the audience what is happening? You are trying to say it in a different manner. किसी को you say it with a lot of energy and happiness कि पता है like मेरा इंस्टा रील है, थोड़ा लाइक शेयर कर देना. हाँ, बहुत अच्छे से बनाया, मैंने देखना क्या स्टाइल मारा है, right? This is one way when you say it to your friend, and to your elder brother you say, no भैया आज मैंने बनाया है. It's just a kind of a try, but don't worry, I'll not spend much time in that. I will be spending a lot of time in my studies. And to a person whom you have met for the first time, you want to impress that, you can say, you can follow me on Instagram and you can see my reels. Those are getting really good reviews from people around. The same thing. बात आप एक ही बोल रहे हो. बात आप एक ही बोल रहे हो, लेकिन the presentation style is different for different people. What is Kuldeep is writing? मैम, पास की क्लासेस मैंने ज्वाइन नहीं की थी तो अब मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है. The past classes are always there in the social media platform. You can go and see them. That's not a very big issue. This is number 1. And number 2, again, this is a new topic. We are doing it today, so it has got no relation with the past classes. So I think we can always start from today's class or whichever is convenient to you, जो आपको सही लगे, right? So the next thing is again let me share and I will explain. So अभी समझ में आ गया ना कि ऑडियंस का क्या इंपॉर्टेंस है. ऑडियंस का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया ना आप लोगों को, राइट? सो it saves time by letting us convey our messages directly to the other person and getting their response immediately. It is the most secure form of communication. It helps to resolve conflict. With face-to-face communication, it's more transparent form of communication as it lets you gauge how others react to it. Now, there are
various types of communication, types of oral communication, right? जैसे कि staff meeting, business meeting, any kind of face to face communication, personal discussion, presentation, telephone call. I'll be taking a session on telephone etiquettes and telephone communication over the phone. Informal conversation, public presentations such as speeches, lectures and conferences, teleconferences, video conferences, interviews, etc. बहुत तरह का ओरल कम्युनिकेशन होता है. जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, कभी अगर ऑफिस में मीटिंग हो, बिजनेस मीटिंग हो, यू गो फॉर अ कॉन्फ्रेंस, राइट? आपका कोई पर्सनल डिस्कशन हो, मे बी विथ योर पेरेंट्स, मे बी इवन विथ अ डॉक्टर, with your teacher, with a lawyer, right? Any kind of telephonic calls, in any kind of informal conversation, that is, you're talking with your family, just over a cup of tea, with your friends, during your break time in the college or in the school. कोई भी पब्लिक प्रेजेंटेशन हो, स्पीच, जैसे हमारे पॉलिटिकल लीडर स्पीच देते हैं, the lectures in the classroom or outside the classroom, and conferences, teleconferences, video conferencing. Teleconferencing and video conferencing are so very important these days post pandemic, that every day we are into it from the morning till night, whether it is your class, whether it is our sessions, any academic review meeting, whatever. इंटरव्यू, जब नौकरी के लिए हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, वो भी हो जाता है ओरल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल. और उसके बाद क्या है, ग्रुप डिस्कशन होता है, राइट? क्लास में प्रेजेंटेशंस होते हैं, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, गाना गाना होता है, कविता बोलनी होती है. सो ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. And what is the advantage of oral communication? Quick and prompt, with the opportunity to both the transmitter and receiver of the message to respond directly. जल्दी जल्दी, जैसे मैंने आपको कहा, oral communication is very very spontaneous. ऐसा नहीं कि मैं 5 मिनट सोच के एक सवाल का आंसर करूं, नहीं. I can at the most think for 30 seconds, because if I think for 5 long minutes, people will understand that I am not being able to understand. मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है. ओके, परमिट्स प्लेन लैंग्वेज. ओरल कम्युनिकेशन में हम लोगों को उतना लैंग्वेज पे ध्यान नहीं रखने से भी चलता है. वी कैन स्पीक इन आवर colloquial terms, we can speak in our colloquial language, but not always though. हर समय नहीं होता है. जब हम लोग कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या फिर कोई स्पीच दे रहे हैं, कोई लेक्चर में है, कोई टेलीकॉन्फ्रेंस में है, we cannot use colloquial candid terms. We have to be careful, but at the same time we can use simple language. We must use simple language. Questions can be asked immediately to improve understanding. कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जैसे अभी आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं, मतलब even if you are not debate, right, Jasmine? Even if you are not asking me the questions, you can share it in the chat box, which is also quite helpful, I believe, right? So in that case, oral communication में ये जो पूरा process है ना, yes, IELTS paper में there's a lot of listening and speaking skills, right? Yes, speaking is SPAKING, right? Speaking. So in that case, we have to keep in mind that oral communication is more and more spontaneous in nature. You can ask immediately, right? It is generally inexpensive in the sense it can be done with very limited tools, right? You don't need a lot of things. Like agar exam written communication ho, or you have to write an email, आपको internet connection चाहिए, ये चाहिए, papers चाहिए, pen चाहिए. So in oral communication ये सब का कुछ जरूरत नहीं है. It's comparatively less expensive in nature. Oral communication can be supported by non-verbal communication
such as gesture which enhances the message. This is a very important thing in oral communication. Oral communication में non-verbal communication का, hello गरिमा मैम, how are you? Non-verbal communication का एक बहुत ही important contribution है, एक बहुत ही important contribution है. There's a lot of I mean, both the oral communication and the non-verbal communication supports each other, complements each other absolutely, right? Because how I use my hand, it shows my confidence, it shows the person's confidence, knowledge, understanding about a particular thing. At the same time, it also shows the emotional status of the person, the emotional status of the person, whether I am happy, whether I am sick, whether I am angry. जब हम लोग बात करते हैं, yes, you're right, जब हम लोग बात करते हैं तो that becomes very very prominent in case of oral communication. जब हम लोग लिखते हैं ना, we become more conscious about our emotional mindset, about how I am going to react, because there we get time, वहां पे हम लोगों को टाइम मिलता है. लेकिन यहाँ पे as I told you, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही spontaneous है, बहुत ही spontaneous है, तो इसके हिसाब से हम लोगों का बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? और बॉडी लैंग्वेज में या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में और क्या आता है? आवर वॉइस मॉड्यूलेशन. In oral communication, pitch, volume, voice modulation, pronunciation, clarity in speaking, all these things are very important, very, very important. So I must know what I am saying, then only I will have clarity. अगर अभी मुझे कोई एक विषय पे सेशन लेने के लिए बोले जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, I know nothing about it. Say for example, I'm being asked to take a session on astrophysics. I will not be able to do it. वो जो pronunciation और clarity in voice ये सब मैं बोल रही हूँ ना, वो सारा कुछ मेरा कहीं पे गुम हो जाएगा. क्यों? Because I don't have confidence in the subject, I do not have knowledge in the subject. So to gain that proper body language, proper non-verbal communication को communication के लिए सबसे पहला जो चीज है वो है your attitude and your knowledge. ये दोनों का अगर ठीक तरह से combination बन जाए, so it's an absolutely very very successful oral communication. Okay, so oral communication can be supported by non-verbal communication such as gestures which enhance the message, facilitates close contact and collegiality, potentially improving motivation. You know, जब एक दूसरे से हम लोग बात करते हैं, अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं भी हो, when I see the other person is absolutely motivated, positive about a certain thing, वो spread होता है. That spreads from one person to the other person. And that is the magic of oral communication. That is the magic of oral communication. Written communication में क्या है? You write from your perspective, I read it from my perspective. And if I am demotivated, if I am not very interested, अगर मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं हो, अगर मुझे procrastination का आदत हो, तो शायद मैं इसे ना भी पढ़ूं. लेकिन oral communication में when somebody is talking to you, how can you say no to that person? कहाँ तक आप no बोल सकते हो? So धीरे धीरे you start enjoying the process and that motivates you. That motivates you. And especially अगर जो communicator है, जो बात करना शुरू करता है, जैसे कि यहाँ पे मैं हूँ, I initiate the process of communication. If he or she is a good communicator, फिर तो this becomes even more interesting. This becomes the process of communication, the process of oral communication becomes even more interesting. So ये ध्यान में रखिए कि oral communication का जो success rate है depends a lot on the person
हु इज कम्युनिकेटिंग, मतलब जिससे प्रोसेस शुरू होता है, कम्युनिकेटर, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। उसके लिए सबसे तीन चीजों की बहुत बहुत आवश्यकता है। थ्री थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very very important. One is the knowledge, the knowledge. Right, Hemant, you're right. The knowledge is important. So whenever you're talking about something, कुछ भी अगर गॉसिप भी कर रहे हो ना, तो गॉसिप में कंटेंट होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो द नॉलेज, नंबर टू इज लैंग्वेज, एंड नंबर थ्री which is the most important thing, जो मेरे हिसाब से, if you ask me, I've been teaching communication for the last 15 years, मेरे हिसाब से सबसे पहले, मतलब the most important prerequisite is your intention. Don't talk because you want to talk. Hello, Dr. Rachna, nice to see you here. Don't talk because you have to talk. Talk because you love to talk on that. Don't become a communication expert, teacher, soft skills trainer, क्योंकि और कुछ करने के लिए है नहीं। तभी कीजिए जब आपको लगे कि यही मुझे करना है। या फिर कोई फिजिक्स पढ़ रहे, कोई एग्रीकल्चर पढ़ रहे, कोई कुछ पढ़ रहे, तभी वो काम करना इम्पोर्टेंट है। तभी वो काम ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है जब हम लोगों को लगे कि आई विल डू दिस एंड नथिंग एल्स, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हर समय ये नहीं होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कंचन सोनी, क्या लिख रहे हो बच्चा तुम? एब्सोल्युटली राइट, हाँ राइट। सो दिस इज अबाउट how you motivate people. If you yourself is not motivated, कोई काम करने से पहले अगर आपके ऊपर प्रेशर लगे, कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले अगर आपको लगे कि भाई मुझे नहीं बात करना है, then that communication process will never be a successful communication process. Will never be a successful communication process, right? You should enjoy your communication. Good evening, Harpinder. Good evening. So you should enjoy your communication process. That is absolutely important. ठीक है? Again, let me share. Now there are certain disadvantages. सबसे बड़ा disadvantage क्या है पता है? सबसे बड़ा disadvantage ये है कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है. There is no record of a formal oral communication process, right? आजकल, of course, with the advent of new and updated technology, you can always record a telephonic conversation that you are having with someone if you think it is important. But otherwise, जब हम दोस्तों के साथ बात करते हैं, जब हम स्कूल में या कॉलेज में सेशंस में जाते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं या क्लासेस लेते हैं या फोन पे किसी एक दूसरे के साथ बात करते हैं, तब क्या होता है? There is no record. That is why in official communication, it is very important to document things. So written communication has an edge over oral communication when it comes to documentation. Okay. So documentation is very, very important. It is said that document what you do and do what you document. When you go to the professional life, that is very important. Unless the conversation is recorded, there is no formal record of what is being said. It may be suitable for confidential or personal information. For anything, if you go to a court of law, oral communication doesn't have much importance there. Everything has to be documented, right? Often more time consuming than send email. Why? Because बात करते ना हम लोग क्या करते हैं? What we generally do when we start talking, we actually keep on talking and we deviate from the right track. इधर उधर चले जाते हैं हम लोग. So जब हम लोग लिखते हैं, what is the
advantage or merit of written communication. You can, before you send it to others, दूसरों को भेजने से पहले, you can actually go through it, do the needful editing, corrections, redrafting, जो कि oral communication में करना बहुत ही मुश्किल है. एक बार बात मुंह से निकल गया तो निकल गया. You cannot take it back. You cannot bring it back. So that is one thing which is very, very important. It relies on the presenter's verbal skills. Yes, अगर presenter जो बात कर रहे हो, अगर वो अच्छे से बात करना उसे नहीं आता हो, सब, see, everybody is not a good speaker, right? And you need not be also. लेकिन बात करने के लिए एक स्टाइल, एक एटीट्यूड, एक ऑरा होना जरूरी नहीं, बट अच्छा है अगर हो जाए तो, राइट? Formal presentation, it relies on the presenter's verbal skills. Formal presentations are time consuming to prepare. So anything you want to do properly is time consuming, so I'm not getting into that. Now, tips to improve oral communication skills: simplify and stay on the message. This is very important thing. Very, very important. Engage your listeners or readers. Take time to respond. ये नहीं कि जल्दी जल्दी बताना है. No, make sure you are understood. आप जो बोल रहे हो वो लोगों को समझ में आ रहा है, उस पे ध्यान दीजिए. Develop your listening skills too. If you are the communicator, doesn't mean that you will keep on talking and talking. You will not listen to others. Body language is important. Body language is not only important, it is absolutely important. And the last one, maintain eye contact, respect your audience, and make communication a priority. That is important. You know, आजकल हम लोग क्या करते हैं? What we do actually, we try to communicate, but at the same time, we see the mobile phone, we see here and there, we try to talk to someone else. Yeah, in betweens we try to talk. ये सब ठीक नहीं है, right? We have to concentrate on the oral communication process, right? And one very important thing which is not written in the PPT, that is prepare. ऐसे नहीं जाके बैठेंगे. Not everybody is Amitabh Bachchan with a baritone voice and an aura of his own that we start speaking and people goes gaga over what we are saying. लोगों को लोग एकदम देखते ही रहे, सुनते ही रहे हम लोग क्या बोलते हैं. नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट? हम लोगों को इसके लिए बहुत 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 ज्यादा प्रिपेयर करना होता है. Stand in front of the mirror. See how you look when you speak. See how you look. If you do not like your looks, change it. Practice and change it. Hemraj, Aryan, Haji, Nisha, right, ma'am, speech. Okay. तो इन सब पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. और क्या जरूरी है? ये सोचना कि जो मैं बोल रही हूं, इज इट मेकिंग एनी सेंस, या फिर मैं अनाप शनाप कुछ भी बोलते जा रही हूँ, लोग मुझे पागल समझे, कुछ भी समझे, एंड आई एम टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग. क्या ऐसा भी होता है? Keep that in mind. Okay, कि whatever I am trying to say, is it making any sense? And to make it sensible, जो मैं बोलना चाह रही हूँ उसको सेंसिबल बनाने के लिए what do we have to do? We have to read, we have to learn, we have to observe, we have to see things around. कान, नाक, दिमाग सब कुछ खुला रखो, so that you can read from whatever you read in the newspaper, whatever you see in the television, whatever you see in the nature around you, you can relate to things. Who's a good communicator? जो एक बात के साथ दूसरे बात को रिलेट कर सके, है ना? Focus, absolutely, Hemant. I agree with you 200%. We should do that, but we are not concentrate on conversation. Yes, we do not concentrate on anything. We do not concentrate. It's a huge problem. It's a huge problem with the concentration of today's generation. I really do not know how to deal with that, right? But the thing is,
अ गुड कम्युनिकेटर वही है जो सारे जगह से बात कर सकते हैं, सारे जगह की बातों को लाके एक जगह पे उसको दे कैन ब्रिंग इट ऑल टुगेदर टू वन प्लेस, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट। और वो कैसे करेंगे? वो करेंगे क्लियरली। बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स, डिफिकल्ट थियरीज ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। ओरल कम्युनिकेशन में तो एकदम ही नहीं। ओरल कम्युनिकेशन आपको धीरे, आई मीन स्लोली, क्लियरली, आराम से बोलना होगा, आराम से बोलना होगा, राइट? क्यों? क्योंकि उसके अलावा देर इज नो ऑप्शन, देर इज नो ऑप्शन। अगर मैं इस तरह से बात करूं जो दूसरों को समझ में नहीं आए, तो दूसरे मेरे बात सुनेंगे ही नहीं। दे विल नॉट लिसन टू मी, दे विल नॉट लिसन टू मी, राइट? अगर मेरी बात दूसरों को समझ में आए, दे विल लिसन टू मी। मी मीन्स टू एनी वन, me means to anyone for that matter. So the clarity in my thinking, clarity in my speech, and clarity in my delivery is very, very important, right? Second is using the right terminologies, right word in the right place. Very important, very important. इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें हमारी स्टॉक ऑफ वर्ड्स को बढ़ाना होगा। पता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड टर्मिनोलॉजी, और each sector, rather I'll explain it to you, each sector comes with certain terms, okay, and those terms needs to be known. Say for example, I'm talking about tourism, I'm talking about tourism, or I'm talking about agriculture, or I'm talking about law. I'm trying to get, people. Yes, Hemant, you are right. If we are good listeners, we are good speakers too, right? Right? I'm talking about law. I'm talking about the education system of a country. तो हर जगह पे एक कुछ विशेष टर्मिनोलॉजीज का यूज होता है, टेक्निकल टर्म्स का यूज होता है। वो जानना और उसका यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लॉ में एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, दैट इज सबजुडिस्ड, सीजीपीए। सीजीपीए इज वन वर्ड, वन एक्रोनिम which is used in the academic sector, cumulative grade point average. तो मैं अगर एकेडमिक्स के बारे में बात कर रही हूँ और मुझे सीजीपीए पता नहीं है, then I have to do my homework. I have to do my homework. ये बहुत जरूरी है. So the right word, okay, is very important, very, very important, right? उसके बाद क्या है? The speech should be audience oriented. The speech should be audience oriented. ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए स्पीच हमें बोलना होगा. We have to give a speech keeping the audience in mind, not keeping me. So the audience can be of any stature. I have done my specialization in communication. अगर मैं ये सोच के यहाँ पे बैठूं कि मेरे साथ जो बच्चे हैं आज इस सेशन में सारे कम्युनिकेशन से है, that is my problem in understanding. I have not understood my audience well. I have not understood my audience well, right? So I have to keep those in mind. The second thing, I have to be an unbiased communicator. Whenever I am talking to someone, I should keep in mind his values and ethics in mind. मैं ऐसे बात ना करूं, when I'm talking about professional communication, मैं ऐसे बात ना करूं जिससे किसी के विश्वास पे, किसी की वैल्यूज को ठेस पहुंच सकती है. I should not be hurting someone's values, religious beliefs, cultural beliefs, food habit, etc. So
I have to be empathetic towards the values of the other person. I cannot generalize my audience. सारे audience को मैं generalize नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि individual audience comes from individual backgrounds. मेरा जो background है, सत्यपाल, I can see someone called सत्यपाल here. सत्यपाल का बैकग्राउंड कुछ और होगा, निर्मला का बैकग्राउंड कुछ और होगा, कंचन का बैकग्राउंड कुछ और होगा. तो अगर आपको लगे कि मैम को हमारे बारे में सारा कुछ पता है, so she must speak in our way, that is also not possible. And if I think that you will know everything I want to say and you will agree with me in everything I say, then also it is not the right way of starting and proceeding with an oral communication. Okay, am I clear to all of you? सबको समझ में आ रहा है ना? Because you know, हमारा जो विश्वास है, that is individual, and there is something which is called a generic understanding. So we have to maintain a balance between the two. Another thing is understanding the situation and the environment where we are actually talking, where we are actually conversing, कहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, वो समझना बहुत 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 important है. क्यों? क्यों? क्योंकि ये क्या है मैम? आई एम सॉरी, आई एम लेट. ओके, maybe I'm very happy today, right? I meet a person who has just come across a very difficult time. Do I go and show all my happiness to that person without trying to understand the mindset of the person? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ आज, कोई भी रीजन से. तो ये क्या जरूरी है कि मैं जाके उसको विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझे कि उसके ऊपर क्या चल रहा हो और उसके मन में क्या चल रही हो, आई स्टार्ट शेयरिंग माई हैप्पीनेस? देयर इज नो इजी ट्रिक फॉर स्पोकन इंग्लिश. कुलदीप मट्टू, मुझे नहीं पता है बेटा स्पोकन इंग्लिश का इजी ट्रिक क्या है. आई मीन मुझे ना किसी भी चीज का शॉर्टकट्स नहीं आते हैं. थोड़ा टिप्स मैं हर रोज आप लोगों को देती हूँ. अटेंड द क्लास. इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, यू विल फाइंड हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. ठीक है? कोई इजी ट्रिक्स नहीं है. ट्रिक करके कुछ नहीं होता है. ट्रिक यानी व्हाट इज द हिंदी ऑफ ट्रिक, आई डू नॉट नो. लेकिन ट्रिक करके कुछ सीखा नहीं जा सकता है. यू हैव टू लर्न इट इन द entirety. You have to learn it in entirety. Okay, so आप please class पे ध्यान दीजिए, because every time if you come up with something which is bothering you, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा. क्लास पे ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा. These are very easy things. आप लोग स्कूल लाइफ से ये सब करते आ रहे हैं, so you will be able to understand. Don't worry about it. Don't worry, right? The other thing is, as an oral communicator, you have to make things interesting for your audience. You have to make things interesting for your audience. अगर audience अगर बोर हो जाए, तो वो oral communication, don't be sorry. Please don't be sorry. I know you people are very young and all, so I am there to help you out. ये session ही है आप लोगों को help करने के लिए. So ऑडियंस अगर बोर हो जाए ना आपसे, तो वो ओरल कम्युनिकेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है. बट सेइंग सो यू आर नॉट एन एंटरटेनर. आप एंटरटेनर नहीं है कि आप ऑडियंस को एंटरटेन करते रहेंगे. आपको जो कंटेंट डिलीवरी करना होगा वो करना ही होगा. सपोज यू आर बीइंग टॉट सम वेरी इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स. उसको कैसे एंटरटेनिंग बनाएंगे लोग? देयर यू हैव टू मेक इट इजी, अंडरस्टैंडेबल फॉर योर ऑडियंस.
राइट? इंटरेस्टिंग करने के चक्कर में यू कैन नॉट मेक फन ऑफ एवरीथिंग, ये नहीं होता है, बिकॉज ओरल कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस डिस्कस होता है, राइट? रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विथ ऑस्ट्रेलिया ओवर अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो वहां पे एंटरटेनमेंट कहां से आएगा? तो इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेटी, मतलब जो सुन रहे हैं उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए माइंडसेट, कहां पे मुझे क्या चाहिए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है टू make the communication process interesting, to make the communication process successful. Whenever I say interesting, please don't think that interesting means entertaining. No, interesting is never entertaining. Interesting means covering the agenda successfully. जिस विषय में हम लोग बात करना चाहते हैं या बात करना शुरू किए हैं, उसको ठीक से कवर करना, उसको ठीक से कंप्लीट करना, दैट इज व्हाट एन ओरल कम्युनिकेशन इज, राइट? तो अगर हम लोग सोचे कि ओरल कम्युनिकेशन विल बी इंटरेस्टिंग, यस इट कैन बी इंटरेस्टिंग, बट इट कैन बी ऑल्सो नॉन एंटरटेनिंग, बिकॉज हर टाइम हम लोग हिंदी मूवी या नेटफ्लिक्स की सीरीज के बारे में बात नहीं करते हैं, राइट? इट शुड बी कॉन्क्रीट, यहां वहां की बातें करके हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, यहां वहां की बातें करके हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सो ओरल कम्युनिकेशन के पहले चाहे वहां पे हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हो या फिर कोई स्पीच बोल रहे हो या फिर ऐसे ही क्लास में टीचर के सामने अपना आंसर बोल रहे हैं, it has to be concrete. Concrete means complete in itself, right? Complete in itself, right? I agree with you, ma'am. Right? Thank you, Poonam. और एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक अलग सेशन भी आप लोगों का होगा, that is you must do it with a lot of confidence and conviction. And confidence is a way of life. If someone is confident, overconfidence के बारे में मैं नहीं बात कर रही हूँ, जॉली यादव is saying right now. ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कॉन्फिडेंस के बारे में। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जब हमें पता है कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, when we know that what am I going to talk about, when I know why I'm going to talk about it, and when I know how am I going to talk about it. तो जब मुझे पता होगा मैं क्या बोलने जा रही हूँ, क्यों बोलने जा रही हूँ और कैसे बोलने जा रही हूँ, ये तीन चीजें when this would be clear to me, taken care of, confidence is taken care of, right? And another thing which is very very important in oral or any type of communication in our day to day life, that is being truthful. अगर मैं झूठ बोलूं ना तो कभी मुझे कॉन्फिडेंस, I try to fake something जो मैं नहीं हूं, अगर मैं वो समझाने की या वो स्टैब्लिश करने की कोशिश करूं तो आई विल नेवर बी कॉन्फिडेंट, और वहां पे फम्बलिंग होगा, वहां पे इधर उधर की सोच दिमाग में आएगी, वहां पे मेरा आई कांटेक्ट सही नहीं रहेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन सारी चीजों को समेट के एक साथ we have to take all these things together, and then only we can be a good oral communicator. And for that we need a lot and lot of practice, trust me, lot of practice. एक्सटेम्पो करो, जीडी करो, स्पीचेस दो, डिबेट करो, डिस्कशन करो, you can do so many things, right? Take your mobile phone, do a 5 minutes video recording, and you speak about any topic under the sun in any language you want to. पहले इंग्लिश जरूरी नहीं है, पहले इंग्लिश जरूरी नहीं है,
Okay, Dolly is saying you do great act of optimism, ma'am. Thank you so much. If I can motivate even one person here in this group who are attending my class, I will think that I have been I have achieved a little bit of success as a communication and soft skills trainer. Happy Guru Purnima. Thank you so much, Hemant Narayan. Thank you. सो इन सारी चीजों को मिला के ये तो हो गया थियोरी पार्ट जो मैंने आपको बोल दिया, ये करो ये मत करो, डू दिस डू दैट, डू दिस डू दैट। लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। दिस इज नॉट एन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, otherwise we could have practiced. Never mind, I'll tell you how to practice and you can always do that. So you take your mobile phone in your hand, put on the video recording on and you speak on a topic. You see how you speak. Simple, easy and effective, right? And another thing, this is, कौन है वो जो मुझे पूछ रहे थे कि simple trick of group discussion is helpful. Absolutely, simple trick of spoken English. Now I'm giving you a simple trick of easy trick of spoken English. That's what we're saying. So no, you take any topic. Suppose you take book, and you try to find out 20 words related to book. So for example, book, hardcover, paper cover, writer, publisher, pages, price, bookstore, then edition, then cover, okay, book cover. So in this way, you can take any topic, and you try to list down, right? You try to list down as many words as you can related to that particular item, related to that particular topic. Say the drawing room of your house or the sitting area of your house. You have chairs, you have sofa, you have a table, you have a television, you have a flower vase, you have curtains, you have drapes, you have wall hangings, you have doors, you have windows, you have carpet, whatever, right? So this is very very important, ठीक है? इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखोगे and you do it, it would be easier for you. It would be easier for you to learn the topic, learn the language. So this is an easy trick I have shared with you. Anything else you can ask me, otherwise I will be signing off from this session for today, and I'll see you again on Monday. Any feedback, anything that you want to share? I believe you have understood. And also in oral communication, take care of your styling a little bit. थोड़ा अपना स्टाइल पे ध्यान दीजिए, किस तरह से बात करने से people feels positive, right? It's not only about people, सिर्फ लोगों के बारे में नहीं, you also should positive. So if you feel positive, you will be able to make other people feel positive. Right? That's it, and that's all for this session of soft skills and communication classes on the Facebook live page of SKD University. Just a reminder to all of you. Anand Kanchan is saying, thank you, ma'am, for this wonderful class. Oh, thank you so much for attending and being with me, with your comments and with your ideas shared in this platform. Once you finish attending all the sessions, you will be getting a certificate of participation from SKD University. Keep on updating me with your queries, with your requirement. Yesterday, someone asked me about modal verb. Next week, we will do modal verb. Don't worry about that. I've already taken it into account. Right? And thank you. Today's class was good for us. Okay. Thanks. So take care, enjoy your Sunday, have fun, and I'll see you again on Monday at 5 o'clock. Till then, bye-bye.